Assalamu alaikum ji. This is Raheel Khokhar from Code Movement Pakistan. We are here again with another session of our weekly jam with Code Movement Pakistan. आज थोड़ा सा हम लोग स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं और दिस सेशन विल बी रिगार्डिंग हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब. तो इसके लिए आज हमने एक बड़े स्पेशल से गेस्ट को दावत दी है और शी इज़ एन एक्सपर्ट एक्चुअली in getting dream jobs and hiring people for the best suitable jobs. So she's an actually work. She's a talent acquisition specialist, and recently she has topped over 100,000 LinkedIn followers, which is an achievement on its own. She's working as a business recruiter at Motive, which was formerly Keep Trucking. She's from Karachi, Pakistan. तो टाइम ज़ाया किए बगैर उनको स्ट्रीम के ऊपर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिशाल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं. आई एम डूइंग वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. कोड मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मेरे ख्याल आप पहली दफ़ा जलवा नुमा हो रही हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. Yeah, thank you so much for having me. It's an honor. गुड. सो टॉकिंग अबाउट कोड मूवमेंट पाकिस्तान, ये एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है फॉर टेक्निकल पीपल्स. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं उनका ये एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है दैट हैज़ बीन ऑपरेशनल फॉर ओवर 7-8 years नाउ. 2013 में हमने इसको स्टार्ट किया था एंड वी हैव बीन डूइंग सो मच ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड टेक्निकल डिस्कशंस, बूट कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी कुछ चल रहा होता है ऑन एंड ऑफ. So it's always helping the community here in Pakistan. I know, right? This is such a great platform, and much needed in today's time. The market is so rapid, so fast, and so exponentially growing that you need all of this, on a daily basis once you're in the market and in the Yes. corporate world. So और thank you so much पाकिस्तान, for this. आपको पता है ना, ये हमारा जो एक पाकिस्तानी फैक्टर है ना, मतलब वी आर बीइंग स्लो, वी आर बीइंग बिहाइंड ऑल द Yep. टाइम. So we need these pushbacks in every walk of life, I think. बिल्कुल 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 बहुत ज़रूरी है. द यूथ इज़ व्हाट मेक्स पाकिस्तान राइट नाउ. ठीक है, सो कुछ जगहों पे हम ऊपर आ चुके हैं फ्रीलांसिंग के डोमेन में, आईटी इंडस्ट्री में, बट इट्स स्टिल, we are still a lot behind and competitors and stuff. So इस तरह के pushbacks, इस तरह की trainings, इस तरह के sessions, इस तरह के podcasts, they are pretty necessary for the youth specifically जो अभी इस वक्त market में हैं. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं, क्या रेसिपी है लिंक्डइन के ऊपर 1 लाख टाइप के फॉलोअर्स गैदर करने की? गिद्दड़ सिंह क्या है? So, it's really funny because almost a year back I was at 50K, which was in 3 years. So 3 years mark, I was at 50K, and within a year, I reached 100, and it is, pretty unreal. So, I will be discussing it in detail. के की क्या है, but I really found out the importance of LinkedIn. I, accepted the fact how important it is for me being in today's job market. That's pretty much it in one liner. We'll discuss it in detail how I did that, because that's part of the session. But what I in a one liner, I try to find out and I try to accept the importance LinkedIn brings in our life being in the corporate world these times. गुड. अच्छा, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आपसे पूछने की कोशिश करूँ आसान अल्फाज में. एंड दीज आर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द करियर, और जिस तरह के लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं. मेरा अपना भी काफी सारे टेक्निकल इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है, तो वहां से भी ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं. मेरा ख्याल है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स getting a job, towards moving a job hunt is, I think, resume writing. अपने True. CV को True लिखना, that. बनाना. True that. True मुझे that. ये बताइए,
मैंने ये देखा अगेन आई ट्राई टू कीप दिस डिस्कशन फोकस्ड ऑन पीपल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, Yeah, but टेक्निकल टाइप। there are gonna be some generic answers to the questions as well. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत थक्कड़ होते हैं सीवी लिखने में, बहुत बुरी सीवीज होती हैं। एम आई ट्रू? Yeah, true, completely true. I've been a technical recruiter for 3 years, and that's completely true. मुझे बताएं हाउ टू इम्प्रूव ऑन दैट। So I basically found out the importance of resume writing in your job search 2 years back when I was trying to switch one of my job. I'm keeping my example because I faced all of this in a practical world, and then I came across the solution. So I was trying to switch a job, and I was not getting calls back, and I sat down and I thought, okay, bhai, what could be the reason? And then I looked at my resume and I was like, yeah, being a recruiter myself, even I won't give a call to this. And this is true. This is true. You know, being a recruiter, once you look at a resume, you make up a mind whether you're going to give them a call or not, because that's the first impression you're putting on somebody, or the employer or the recruiter. So first step is to write it yourself, right? These days there are thousands of templates online available free. So what people do is to, the max, the software developers or anybody, what they do is to put in the details which are easily swappable, like your name, your contact details, and the job titles. But that's not it. For a good resume, you should write it yourself, so that once the recruiter calls you and they ask you about yourself, you know what you have to say. um, when you write it yourself, आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा है उसमें और आपको क्या जवाब देना है. स्टैंडर्ड रेज्यूमेस में अक्सर आपको भी नहीं पता होता कि आपने अपने स्किल सेट में जो स्किल्स लिख के भेजी हैं वो आपके अंदर है भी या नहीं है. रिक्रूटर उस बारे में आपसे पूछ रहा होता है, समटाइम्स यू आर क्लूलेस. सो do not use standardized, like use the templates, but the wordings that you put in, you should be writing it yourself. Pointer number 2 is to keep it to the point and keep it concise. No extra wordings, no extra paragraphs, nothing. Apart from what you are doing is required on a resume should be to the point and very concise. If you're a mid-level or a junior level person, your resume should be one page only, because that's the easiest way a recruiter can skim through whatever you are doing currently. But if you're a mid to senior level person, you can go up to 2 or 3 pages maximum, not more than that. Nobody's gonna go through a whole novel to just understand what you're currently doing. That's just not of any help. The most important point right now is for your resume to be ATS compatible format. All of the major companies, all of the big companies, they're using ATS these days. If your CV is not compatible with the formats like PDF, Word, these are the two most compatible formats for the ATS. ATS is application tracking system. The software or platform where you apply and your CVs are gathered by the recruiter. So if it's not gonna be compatible with the ATS, nobody's gonna know that you applied. It's just gonna be a blank page over there, or just ATS is gonna tell the recruiter that this format is not supported. There goes your application down the trash. Not useful at all. The last point is to keep your resume updated, एंड अपडेटेड इन अ सेंस कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड आपने दोबारा अप्लाई करना है, इवन इफ इट्स समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 3 4 5 years. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं पिछले 4 साल से, बट स्टिल गो थ्रू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. देयर वुड बी फ्यू पॉइंट्स दैट you would need to change while you're applying for that job. Make some amends, update it according to the job you're applying, and that's pretty much it for the resume part. ओके, अच्छा मेरे पास दो तीन और क्वेश्चंस इसी डिस्कशन में निकलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे ये बताएं, if I am applying for a job and you are the recruiter and my CV will going to be landed at your desk, how many seconds I would say do I have
in order to get my CV noticed or trashed? I usually take 10 seconds because 10 seconds is all I take to skim through your current job. If your current job is well put on your resume, I will know if I'm gonna hire you or not, or if I'm gonna even give you the initial screening call or not. That's it. Guys, 10 seconds. You got 10 seconds to get your CV noticed. Otherwise, you are out of the game. Okay? 10 seconds. Because Acha. 3 or 4 years in this job, um, looking at the first few paragraphs or looking at the first few listings on the resume, you know if you're gonna make the call or not, and that usually takes 10 to 15 seconds, not more than that. And मेरा ख्याल है cover letters are not needed unless asked for. Not at all, Okay. not at all. और जिंदगी में जितनी स्किल्स कहीं से सुनी है वो उठा के सीवी पे नहीं डाल देनी. Only No. mention what you know. Exactly, exactly. Skills or ये जो skills वाला part and your hobbies and interests वाला जो part है उसमें आपने दुनिया जहान की चीज़ें list down नहीं कर देनी होती हैं. It's just there to for us to have an overall idea what kind of a person you are. ठीक है. Your job description is gonna tell us कि भाई what do you have what we are looking for. If you say, I can share a few examples, like a couple of examples for a good and a Sure. bad resume, and we can see. ठीक है. Okay. Okay. If you want to share your screen, तो Yeah, जरूर करें. I'm gonna share it right now. I think कुछ black ही है. देखें जरा सही शेयर हुई है स्क्रीन आपकी. Yep, it says it's sharing. लेकिन कुछ ब्लैक नजर आ रहा है. हैंग ऑन. Can you see it now? ब्लैक है स्क्रीन. दोबारा ऑफ करके दोबारा रीशेयर करें. शायद कोई गलत स्क्रीन शेयर हो रही है. Sure, just give me a second. Is it okay now? We can see it now. Yes. All right, perfect. So I may not be able to zoom, but we can have an overall view. So on your right is an example of a bad resume. Now, why is it a bad resume? So there are a few key pointers which you have to keep in mind. Once you enter into a corporate world, like you have been doing jobs for a while now, even if you have done one job for a while now, that is the first thing that goes on your resume. After your personal profile or after a 2 to 3 liner summary, education is not something that goes on the CV, like for the second part of what you're putting on the CV. So once you put in your resume, you can see it on the left side that you either start with your technical skills if you are a software developer or technical person, and the top few things should be your work experience and your skills, because that is something that we see in the first glance, right? फर्स्ट ग्लांस में जो आपको नजर आ रहा है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीवी पे लिखने के लिए. सो work goes on top. For work, you don't only list down what you have been working on, that you can see on the right side के सिर्फ आपका job title लिखा हुआ है, उसके आगे company का नाम लिखा हुआ है. That's not it. That does not cut it these days. You put in your job title, you put in the company that you're working for, and then in a few lines, in a few pointers, or in a paragraph, you paraphrase or jot down the job description that you currently are on. What are your day-to-day responsibilities or a few achievements. 3 to 4 lines, that's it. Maximum 3 to 4 lines, because the most concise it is, the easier it is for us to skim through it easily. So
Your profile goes in, your summary, and then your work experience, your technical skills, and at the end you can put in your education and if any certificates, if you have those. So that's basically pretty much it. ओके। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्लीज 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 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करने के बाद राइट क्लिक करके उसके स्पेलिंग्स चेक कर लिया करेंगे। वी डू नॉट Spell check. एक्सपेक्ट स्पेलिंग Yeah, मिस्टेक्स। ओके। exactly. Spell check is very necessary. You know, it's the biggest turn off for a recruiter to see spelling mistake, grammatical mistakes. We accept that because nobody, you know, is perfect at an international language or something that's not your mother language. But spell check is one of the most basics once you are writing a resume, and it's not even that much of an effort. Word does it for you. It actually does it for you. यस, वर्ड डज इट फॉर यू। आजकल ग्रामरली इट्स वेरी इन मार्केट। Exactly, तो yeah. वो थ्रू आउट द कंप्यूटर सिस्टम वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। आप जहाँ You जा cannot make excuses anymore. You cannot make excuses anymore. Everything is on your fingertips. The only thing needed is motivation and effort. That's it. ओके या चलें सीवी से आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, how important is your LinkedIn profile these days in order to get a dream job? So I've been shouting it out loud for 2 years now. LinkedIn is your personal brand. LinkedIn is what shows the world in today's time what you're capable of, what you're currently doing, what you're interested in, what you want to do, and everything else. So, you were asking me how did I reach to 100K? Even if 100K is not a benchmark, just getting, the world for for the world to know you, there are four things only and only: post, comment, connect, and share. That's it. Even if you can't do it on a daily basis, do it twice or thrice in a week whenever you get some time. But investing on LinkedIn, investing on being active on LinkedIn will pay you with your dream job. That's my promise for you. Facebook, not LinkedIn, right? LinkedIn, yeah. Facebook is just, Says, Facebook doesn't do it for you anymore. Facebook doesn't get you jobs. Yeah, no, LinkedIn it does, does not. Yeah, it does. and we And need to concentrate. Please. yeah, there are so many platforms these days like Indeed and Rosie and Jobby and Glassdoor and whatsoever. But I can say that with so much surety, LinkedIn gets you jobs faster than any other platform these days because of the fact that you can connect in real time with people that are hiring. That you cannot do that on any other platforms like Rosie or Indeed or Jobby or Glassdoor, or any other platform that you can call off. There is no option of interacting, connecting with the people that do the hiring, in real time. So that's how you get the job. That's how you do it. There are a few tips that I can share as well, if you are, on the LinkedIn for the job search. So LinkedIn is basically your moving resume. It's changing all the time, it's updating all the time. So what you can do is to keep it updated all the time. I will share the example in real time as well by showing my own profile. One thing, while you are connecting with the recruiters, you do not connect with one liners like hello, how are you, madam, can I have 5 minutes of your time, or anything like that. It throws you off. You just need to connect with a two, three, or four liner paragraph, which is readable within seconds, which tells the purpose of why you're connecting with the recruiter or the hiring manager or whosoever you're connecting with. So it just takes like only a couple of minutes to come up with something that you can put in while you're sending out the request. LinkedIn gives you the option of sending out notes
just put a word over there while you're connecting. After connecting, ये messages करना कि hello, how are you, can we talk. इवन आपका अगर पर्पस ये होगा ना कि आपको उससे आगे जॉब की बात करनी है, nobody is gonna respond to you. I never respond to such messages at all. if if there are concise paragraphs that tells you कि आप मुझसे क्यों connect करना चाह रहे हो, I would definitely get back to you. um, don't do stuff like that on LinkedIn जिससे रिक्रूटर पलट के आपकी प्रोफाइल ना देखे. सो प्लीज लिंक्डइन को ट्रीट नहीं करना है फेसबुक की तरह, ट्विटर की तरह, टिंडर की तरह या किसी भी और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह. Yeah. And if you have a habit of sending such type of messages, I would rather defer you to Tinder. Yeah, so Yeah, you can do sure, that. please go over there. So if yeah, if we can share the screen again and try to share my LinkedIn profile. Sure. Let me know once you can see it. Yes, we can see it now. So where the 100K journey started was me putting an effort updating my profile. So the banner that you see on my profile, I made it myself. And I used Canva. I did not know how to use Adobe or Figma or any other design platforms. I went to Canva. Everything was self explanatory. I chose a background, I put in words myself, and it just tells you that you put an effort over there. I put in my personal email addresses, my personal contact numbers, or what I do, and it just shows you that you put in effort over there, and it just automatically tells people, or tells those who are reaching out to you that you are doing something in terms of getting yourself a job or something else. The other part is to keeping the headlines over here up to date. So it does not necessarily means कि आपकी जो job title है वही यहाँ पर हो. You can put in a few few titles which are related to what you do. So right now I'm working as a business recruiter at Motive, but my headlines show what I really am, like what my specialty is, what my skills are. So I am good at talent acquisition, I'm good at headhunting, I have been a tech recruiter for 3 years, and I am overall an HR specialist. So that's what I wanted to put over there. Now LinkedIn gives you an option to put out hashtags, विच मीन्स कि आप इन हैशटैग्स को यूज़ करके जब भी कोई पोस्ट करेंगे उसकी रीच ज़्यादा जाएगी. लिंक्डइन का एल्गोरिथम इज़ फास्टर देन एनी अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस. इसकी जो रीच है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती है. सो इवन इफ देर इज़ वन और टू रिलेटेबल हैशटैग्स ओवर देयर in the post that you are using, it's gonna take you places. The other part that you have to keep updated is the about section. This should have a concise summary of what you do, what you want to do, and anything that tells people who you are when they are visiting your profile. Keep your experience part of the LinkedIn up to dated, because this is your resume. This is how people know what you have been doing, what you were doing, and what positions were you working on, for how long did you work on. Keep your educations part updated, keep your license and certifications part updated. If you're doing any certifications, put it over there. um, so this is basically pretty much it. So keeping everything up to date and staying active is the key to doing wonders on LinkedIn. गुड 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 गुड. अच्छा, एक तो आपने बात बताई ना कि people people post jobs on LinkedIn and they hunt people from LinkedIn और लोग उस पे jobs पे apply भी करते हैं. But I don't know about you, but I have a tendency to go and search out for the people on LinkedIn if I'm hiring for a very important position. मिसाल के Yeah, तौर पर मिशाल ज़हरा को मैंने आपने अप्लाई किया है एक important position के लिए. अगर आपकी resume पे LinkedIn नहीं भी लिखा तो I will just go in there and type type Mishal in your Zehra and name. see if you are there and how well you are presented there. Yeah. Yep, for sure. Every niche role that I hire for, either I'm sourcing for that role or the applications are coming in, I would usually go to LinkedIn and see how your LinkedIn is, what
you have been up to, and everything related to what you have been doing. You're unaudible, Raheel. सॉरी, म्यूट. अच्छा, Yeah. हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा एक डिफरेंट टच देते हैं. लेट्स गेट अ बिट मोर टेक्निकल. Mm-hmm. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर ओके, रेज्यूमे राइटिंग इज फाइन, लिंक्डइन इज गुड, लेकिन आई कैन टेल यू कि there are platforms are you're walking and talking CVs. Yep. You're walking and talking portfolios. For example, Stack Overflow, उसका प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, GitHub, GitHub. उसका प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए. सो ये तो मुझे पता है, being a technical guy interviewing somebody. So people like you who are in HR and recruitment world, what do you think how important it is to have your GitHub and Stack Overflow and that kind of technical platforms profiles? First few or first couple of questions that I ask a software engineer is, do you have a repository where your work is profiled? Even not the software engineers only. If I'm hiring a designer, like a UI UX designer or a website designer, I'll ask where your I need to see your Behance portfolio. If I'm talking to a software engineer, I will for sure ask him कि भाई आपकी repository है या नहीं है where your work is compiled, because that helps my hiring manager or the hiring committee, the technical people. It helps them a lot to gauge in what kind of experience or expertise level you're currently on. They can easily see what kind of work you have been doing, what is the level of work you have been doing, and it just makes it easier for everybody to understand where you stand in your in your experience right now. Okay. Again, matlab, agar you cannot get we talked about how to write a good resume and how to update your LinkedIn profile. If you do not get to learn it overnight, Hmm. and आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, टेक्निकल पोर्टफोलियो गिटहब पे, बिहेंस पे, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे, तो these technical portfolios can overshadow those LinkedIn and resume writing skills. Yeah, Do you a think lot of the yeah, a lot of the times that is the case. If if you're talking about seniority level, being a senior developer, if that's the case कि आपकी GitHub की जो profile है वो बहुत strong है, but that's not the first thing a recruiter sees. ठीक है. अगर हमने आपको अप्रोच किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तब तब यू कैन गो ahead and say कि भाई आई डू नॉट हैव एन अपडेटेड resume, this is my git repository, you can go ahead and see what I've been doing. That's that's fine in that case. But if you are applying, still resume, your CV, that's the first thing, that's the first impression. So I don't think that it can overshadow in most of the times. In few cases when you have been approached for a job, when you have been sourced for a job, that can be the case, but it cannot necessarily all the times overshadow that. right, right. Acha, let's talk about communication. When we talk about communication, एक तो है general communication skills, Hmm. how well you talk, सारा आपका from head to toe, Hmm. your body, your words communicate to the recruiter. Okay. Acha, uh, before we move towards the communication part, can we talk about the importance of sending out irrelevant job applications and how bad it is for your career? ठीक है. These days, what I not these days, since the start, what I have noticed is that the most people read on a job ad is the job title. That's it. Nobody, like very few people out of all the applications that you receive, they have read all of the job descriptions. So if I'm making a call,
and I'm saying, hello, I received this application from you for this job, and I wanted to know what you have been doing and all that. The first question would be, can you tell me what is the job description for this job and what would I be need to be doing? And I'm like, you applied for the job, you should know what you are going to be doing for the job that you are applying to. So that's the first thing. You should be reading each and everything written on a job advertisement, from the job title to the job description to the skills required to the shift that you're going to be working in to the perks and benefits that company is offering. If that information is not over there, try reaching out to the recruiter, or once the recruiter reach out to you, it's very important कि सिर्फ recruiter आपसे questions ना कर रहा हो, आप भी उससे questions कर रहे हो, so that you know that the job that you are applying to is the job that you need and is the job that you want to do. So that's really important. Also, don't spam. एक जॉब पे 15 दफा अप्लाई करने से आपके चांसेस नहीं बढ़ते कि आपको कॉल बैक आएगी. सो इट जस्ट थ्रोज ऑफ द रिक्रूटर कि भाई एक ही बंदे ने एक ही जॉब पे इतनी दफा अप्लाई किया हुआ है. आर यू टू डेस्परेट, और आर यू डू यू जस्ट हैव एक्स्ट्रा टाइम ऑन योर हैंड, और व्हाट्स द रीजन फॉर डूइंग दैट? सो spamming and applying to the irrelevant jobs that do not have to do anything with what you do, just because you saw a job title. ज़रूरी नहीं होता कि हर जॉब टाइटल के नीचे वही जॉब डिस्क्रिप्शन हो जो आपकी एक्सपर्टीज से और आपके एक्सपीरियंस से अलाइन करता हो. सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई जॉब टाइटल है, उसके नीचे उस कंपनी को कोई दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप अब तक नहीं करते आ रहे होते हैं. ये आपको कब पता चलता है? जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपको या तो प्री स्क्रीनिंग की कॉल आ जाती है या तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं. यू डू नॉट हेयर बैक फ्रॉम देम एवर अगेन. सो नॉट हेयरिंग बैक is the indication that you either applied to a wrong job, or you did not apply with a good enough resume, or you just did not put in the effort, in applying for that job. गुड गुड, दैट इज वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, रिक्रूटर्स को अपना दुश्मन ना बनाएं भाई, बिल्कुल. अपना दोस्त बनाएं, और सो दैट दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू. ठीक है, ये ना True हो कि that. आपको ब्लैक में डाल दें. बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल. तो लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन नाउ. Yep. Yep. अब देखें, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अप्रोक्सीमेटली 90% जो काम है वो वेस्ट से आता है. बिल्कुल. That means Australia, America, Europe. All of these nations speak and understand English. That's it. True that. How important is your generally English skills and other communication skills? As I was expressing, uh, your body language communicates, your words communicate, English या उर्दू जो भी है, और then English specifically. तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें. How do you see it? So, we accept that we are officially living in a global village for a couple of decades now. Since the internet came, since the revolution in the IT industry and technology came in, the world became a global village, which means everything is on your fingertips. Everything is over there on the internet, so it does not really matter which part of the world you're in. You are connected to the rest of the world as well. So knowing to speak, understand and write a language that is commonly used across the globe increases your chance of better opportunities. These days companies in Australia, even India, UK, USA, MENA region, they're hiring remotely across the globe. So it does not matter if you're sitting in Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, or any other remote areas within Pakistan. You know, if you know the basic, what do I say, even professional proficiency of speaking, understanding, and writing English, you have chances of working anywhere across the globe. So that really increases better work opportunities for you. Now that's for freelancing or working remotely across the world. Even if you're working within the IT industry, most of the clientele, as you just said, is based internationally, spread across United States, Europe, all of the Europe, Australia, Canada, and that those regions. वो जगह हैं जहाँ से हमारा काम आ रहा है, हमारा क्लाइंटेल वहाँ बेस्ड है. ठीक है. सो if you know
a language which is, commonly spoken between the two of you. It just, makes life easier for both of you. Language barrier can be irritating. It can really be irritating. So because IT industries heavily rely and work with international clientele, knowing that language gives you a better chance at a work, better work relationship as well. So even you should be putting in efforts on understand, being able to understand, being able to speak the basic English. Nobody's asking you for a perfect grammar, nobody's asking you for a perfect accent. That does not really matter. You should understand what the other person is saying, and the other person should be able to understand what you are saying. You should be proficient enough to at least communicate, what you're trying to say, what you're thinking, what's going on in your mind, and you should be able to understand what has been said, in front of you. So yeah, that this is really important for today's time specifically. ओके, लाइक अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें से ये भी निकलती है कि डू सम रिसर्च बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू. Yeah. मिसाल के तौर पे अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, लेट्स टेक एनी नेम, अच्छा, सो आई नीड टू सी, गो ऑन टू गूगल एंड उनकी वेबसाइट पे जाएं, देखें ये कहाँ के बेस करते हैं, पाकिस्तान में बेस हैं, क्लाइंटल कहाँ का है, वेस्टर्न है. अब आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है और देयर इज अ गाय लाइक मी जो इंटरव्यू करने जा रहा है, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश. तो समटाइम्स क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं हमारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के रीजन के, वो क्या कहते हैं, कैन वी टॉक इन उर्दू. अच्छा यार, जब मैं आपसे उर्दू में बात करूंगा और अगर आप इंग्लिश में उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाउ यू expect that I'll gonna give you a job and you will satisfy the client with the work. Hmm. क्लाइंट को Yeah. तो उर्दू नहीं आती यार, वो तो अंग्रेजी में ही बात करेगा, उसी में ही समझाना पड़ेगा उसको. True तो that, true that. That's really important. And while you were talking about, okay, you should research about the company that you're going to interview for. That's really important. Most of the times, people come clueless. People really come clueless about your company. That is the place that you are thinking to work for. You know, कीपिंग दिस नॉलेज बिफोर हैंड बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, कि आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वो जगह है क्या, वो काम क्या करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, या वो किस क्लाइंटेल के साथ काम करें, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, स्पेसिफिकली इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. You should know the kind of clientele they have, the kind of work environment do they have. You can find out all of that stuff just by a little research, going on their LinkedIn page, going on their website, looking after the services that are listed over there, कि आपको पता हो if you are aligned with what they are doing. It's really important कि आपका जो आपके माइंड में जो आपकी ड्रीम वर्क प्लेस है, आप असली में भी उसके साथ अलाइन करते हो, उनके मिशन एंड विजन के साथ, या उनकी वर्क कल्चर के साथ, एंड एवरीथिंग and all of that you can find out with a little research. Talk to people who are already working over there, go to their website, go to their LinkedIn and Facebook pages, try searching it up on Glassdoor for the reviews and all of that little stuff. It really helps you. You should really know कि आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जगह है क्या, वो जगह कैसी है, वहाँ कैसे लोग काम करते हैं, and all of that stuff. और हाँ, अगर आप किसी, इफ यू लैंडेड इनटू द इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और जो इंटरव्यूअर है उसने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, तो प्लीज दैट गाय इज नॉट शोइंग ऑफ एट ऑल. ठीक Yeah. है, ये प्रॉब्ली एक रिक्वायरमेंट है, सो दे हैव टू गो थ्रू इट. सही है. Exactly. तो So if we automatically start talking to you or speaking to you in English, that means कि वो हमारी requirement है कि हम gauge करें कि how good you are with understanding that, or how good you are at speaking that.
nobody out of no reason starts speaking to you in English. अगर मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है जिसके लिए मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंग्लिश में बात करे, आई विल गो अहेड एंड स्पीक टू हिम इन उर्दू, ताकि मैं बेहतर तरीके से समझ सकूं कि वो क्या काम करे या क्या काम नहीं कर रहा. बट इफ आई नो दैट he will be required to speak to the clients, and go to client meetings or attend scrums and all that, I will start speaking in English only, and I will ask you to reply to me in English as well, so that that's the basic requirement of the job that I am hiring for. If you're gonna ask me to talk to in Urdu, it's gonna automatically put me off and tell me that you're not gonna be suitable enough for the job. मेरी तरफ से एक दो टिप्स हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. खैर मेरी अपनी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ख्याल वंस आप रोज सुबह उठ के अखबार का एक Yep, reading. आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है, डिक्शनरी साथ रख के. ऑलवेज कीप योर डिक्शनरी विद यू. उससे आपकी लर्निंग स्किल बड़ी अच्छी होती है. और you, यू you can कैन you can download different applications on your phone. It's not even necessary to keep a dictionary with you. There are hundred of applications that you can put in English to Urdu translation, Urdu to English translation. It's just on your fingertips. So yeah, reading is very important. Even if you're reading just a paragraph a day, it increases your vocabulary. It gives you the better understanding of the sentence structures that you can use, and just the basics of how the structure, the sentences are made or written in English. और दूसरी एक चीज दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, दैट इज हॉलीवुड मूवीज, इंग्लिश मूवीज. Yep. इंडियन मूवीज से जान छुड़ाएं. हॉलीवुड, हॉलीवुड मूवी सबटाइटल्स में नहीं देखे. हाँ वो देखें. और दैट विल गोइंग टू हेल्प यू increase your listening power Yep, as well as speaking power, your vocabulary, exactly. everything. Yep. ठीक है. Yep. डे टू डे कम्युनिकेशन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, Cool. लेट मी आस्क यू समथिंग. हर कुछ अरसे बाद मैंने देखा है, और आजकल पर्टिकुलरली पिछले कुछ मंथ्स से there has been quite layoffs in different organizations, especially in software development industry, Yep. especially particularly वो कंपनीज जिनको हम स्टार्टअप्स के नाम से जानते थे, जिन्होंने बहुत सारा सीड फंड वगैरह भी लिया. वी सॉ देम बूमिंग अप इनटू द इंडस्ट्री फॉर कपल ऑफ इयर्स. अब वहां से बहुत सारे ले ऑफ्स हमें सुनने को मिलते हैं. डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट? So yeah, it's sometimes demotivating seeing all of that being posted or being in the news all the time के इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, एक हफ्ते बाद एक और कंपनी का नाम आ जाएगा कि इसने ले ऑफ कर दिया. you know these are times where, सी जितनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी तेजी से ही चेंजेस भी आएंगी. और that change, all of that changes includes layoffs as well. It's a big part of the industry right now, specifically IT industry के साथ, because जितनी तेजी से companies industry में आना शुरू करेंगी, वो उतनी ही तेजी से sometimes वापस जाना शुरू करती हैं, because sometimes they do not start with proper plannings, or not starting with proper strategic alignment and all that. But you should understand that there's still too much in the market because of the world being connected via internet. So it's not that कि एक चीज अगर खत्म होगी तो कोई और दूसरी चीज आएगी नहीं. देयर इज ऑलवेज opportunities there. You just have to be vigilant enough to keep an eye in the market. Just keep your hopes up, keep yourself updated, keep yourself equipped with necessary skills and all of that. And it's sometimes it's a natural phenomena कि it will put you off, or it will sometimes demotivate you कि भाई market में jobs नहीं है या layoffs are all and all that. But keeping your head straight, keep putting your efforts in, and all of this, we have a strong belief कि आपका risk अल्लाह के हाथ में है, and it comes from there. So आपने अपनी effort 100% रखनी है. There will be something in the market for you, not, if not all the times, but in near future, even if you are set back from somewhere. अच्छा, वेरी क्विकली एक चीज जो मेरे जहन में अभी आती है, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. ठीक है. If you True. are skilled enough but your attitude is zero and it is giving red flags during the interview,
I think people won't going to hire you. You should be a people's person. I'm not talking about pleasing anybody. आपकी strategy ये नहीं होनी चाहिए कि आपने हर वक्त लोगों को please करना है and all that. But you should be a people's person. Empathy, sympathy, and all of these, part of, attributes you should have in your self. के लोग आपसे बात करते हुए डरे ना, लोग आपके पास आने से डरे ना, आपसे परेशान ना हो. यू शुड बी वेलकमिंग इन योर नेचर के, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके इंटरव्यूअर ने अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट कर दिया, किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर दिया, तो योर फर्स्ट इंस्टेंट शुड नॉट बी के भाई मुझे कैसे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर दिया, या मैं तो आई कम विद that much of an experience or that much of expertise level, how did you go ahead and do that to me? You should be welcoming to criticism, always open to criticism, always have a, attitude where you are you seems like a people's person. So all of that really matters a lot while you're giving interviews or while you're talking to people that are going to be hiring you. ओके, चलें, मेरी तरफ से एक एड ऑन है इस सारी डिस्कशन में कि आई थिंक being a technical guy, being in the software development industry, you need to learn the right skill. Sometimes ये होता है कि एक बंदा बहुत ज्यादा जगह अप्लाई कर रहा है and he or she is not getting the job they really need. तो there must be something wrong with the skill. शायद आपके पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट में चाहिए, तो इसलिए ट्राई टू नो इनफ कि मार्केट में किस तरह का स्किल इन डिमांड है और आप उस तरह का स्किल लैक करते हैं, और वेदर यू आर रियली पोजेसिंग दैट स्किल और नॉट. एम आई अच्छा, राइट? ये बात जो आपने बोली है ना, आई यूजुअली टेल दिस टू पीपल और स्टूडेंट्स व्हेन आई अटेंड जॉब फेयर्स. व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स एट जॉब फेयर्स, उनके रेज्यूमे पे सिर्फ वो स्किल सेट लिखा हुआ होता है जो उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा होता है, या जो उन्होंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होता है, या उससे पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट रियली नो कि कौन सी लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है इस वक्त मार्केट में, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है इस वक्त मार्केट में, कौन से सॉफ्टवेयर इस वक्त मार्केट में इन है. सो आई टेल देम कि गो बियॉन्ड व्हाट यू आर बीइंग टॉट एट यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली फॉर पीपल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. Even, I have seen people not knowing what PHP is, being a computer science student in their last semester. मतलब आपको PHP के बारे में ही अगर नहीं पता है तो फिर आपने मार्केट में जाके क्या करना है, आई हैव नो आइडिया. स्पेसिफिकली वो जो कहते हैं कि हमें बैक एंड डेवलपमेंट करनी है और आपको ये नहीं पता कि PHP क्या है, या उसके फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, या कौन सी बैक एंड लैंग्वेजेस इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, किन पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, या कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा जिन पे इस वक्त काम किया जा रहा है. सो या, learn beyond what you are being taught, learn beyond what you have already learned, keep on learning. That's, the most important part of life. Learning should never stop. दैट्स राइट. मैं इसी टॉपिक पे एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क. मैंने उस दिन वीडियो भी एक पोस्ट किया था, इसके बारे में कुछ लिखा भी. लारावेल एक स्किल है, ठीक है. There's a big demand of Laravel Yep. in freelance market as well as in on job. Mm-hmm. लेकिन we do not have really good resources for Laravel. Mm-hmm. So eventually हमने क्या किया, हमने सोचा, and at Code Movement Pakistan we started a training of Laravel जो इंशाल्लाह इस सैटरडे से स्टार्ट होगी. ऑनलाइन भी लोग इसको ले सकते हैं. कहने का मकसद ये है, नाउ देयर इज अ स्किल, इट्स एन ओपन स्पेस, ठीक है, और लोगों के पास वो स्किल नहीं है, तो व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग स्किल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. इतना कोई महंगा भी नहीं है, आपने वो कोर्स नहीं भी लेना, यू कैन गो ऑन टू यूट्यूब एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. हर हर टेक्नोलॉजी की अपनी साइड से उनके ऊपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, अपने ट्यूटोरियल, यू कैन गो एंड लर्न देयर. जस्ट गेट टू नो कि क्या जॉब्स इन डिमांड हैं, उन स्किल्स को सीखें और इट विल हेल्प यू गेट द जॉब. अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है तो, और बाकी की 50 स्किल्स हैं जो इररेलेवेंट
है मार्केट के अंदर, True. तो यू विल नॉट गेट द जॉब. इट्स वेरी सिंपल. And for IT industry specifically, अगर आप 5 या 6 या 10 साल से इंडस्ट्री में हैं और आप 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, आप उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहें और एक्सपेक्ट करें कि आप उसी टेक्नोलॉजी के लिए 10 साल बाद भी जॉब्स मार्केट में ढूंढते रहें, दैट्स नॉट पॉसिबल. जितनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो करी है, जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रो करी है, you should be learning new technologies, new languages, new platforms, new softwares every now and then. You should know कि इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ कौन सी लैंग्वेजेस हैं या कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है. आपकी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि 10 साल पहले जो आपको स्किल्स आपके पास थी, उन स्किल्स पे आप अभी तक जॉब्स ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर. दैट इज सो ट्रू. अच्छा, चलें थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं ऑडियंस की तरफ से दो चार, देन वील बी रनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन. तो लेट्स टेक देम वन बाय वन. इट शुड बी ऑन योर स्क्रीन. कैन यू रीड इट? Yep. So, yeah, work from home and remote jobs are entirely different things. Work from home is something that you either get for a small period of time कि अगर कोई ऐसे circumstances या ऐसे consequent atmosphere ऐसा बना हुआ है आपके शहर में या मुल्क में कि जिसकी वजह से आपको कुछ अरसे के लिए घर से काम करना पड़े, so that's called work from home. It's not something permanent. Within the country or outside the country, अगर कोई job है that does not require you to leave your home at all, remote is basically something physically unapproachable to you. आप कराची में बैठे हुए लाहौर में कोई जॉब कर रहे हैं या इस्लामाबाद में या यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट्स अ रिमोट जॉब. कराची में रहते हुए आप घर पे बैठ के हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या एक दिन काम करें, दैट्स कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होम. Remote job is entirely a different genre in the job market these days. अच्छा, इफ यू अलाउ मी, मैं कुछ इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं. रिमोट जॉब है या वर्क फ्रॉम होम है, दोनों केसेस में a tip is that be someone people can trust. Yeah. Do not sneak out. Do not try to be over clever or over smart. जब ये कोविड आया है मार्च 2020 के अंदर, लास्ट वीक में, और लॉकडाउन लगा है, सो पीपल कंपनीज आर पुश्ड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम. रिमोट काम शुरू हो गया. जिनके ऑफिस थे वो भी घरों से काम स्टार्ट हो गया. अच्छा, सो the guys they started took it as an advantage. Yep. और उन्होंने बड़ी हैंकी पैंकी भी की है बीच में. बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, बहुत सारे लोग फायर भी हुए. दे टुक एन अनफेयर एडवांटेज आउट ऑफ दैट. अब कुछ फिल्टर आउट होते होते, या उर्दू में क्या उसको छांटी होते होते, काफी चीजें ठीक होगी. लेकिन अगेन दिस इज अबाउट अ माइंडसेट. तो माइंडसेट ये रखें कि you, whether you're working on site or remote or work from home, whatever it is, be a person that everyone can trust. Yep. Simple. Somebody is watching you or not, you have to be trustable. Whatever you are supposed to give out in terms of an output, you should be producing that output. Doesn't matter if you're working for 9 hours straight or a couple of hours or 4 hours, or whatever you are required to produce the output for that particular day, you should be producing that output no matter what. So that's the biggest tip. Working from home or working remotely, if you are successfully giving out the output that you're supposed to give out, everything is gonna stay fine. हाँ, एंड इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, सो बी कम्युनिकेटिव, टॉक टू द Yeah. रेलेवेंट पीपल. उनको बताएं यार, आई एम गोइंग ऑफलाइन, लाइट नहीं है, व्हाटएवर इट इज. लेकिन डोंट ट्राई टू स्नीक आउट. Yeah. दैट्स इट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Right. How much does it impact your resume if you have gaps between your past job and the last? So it used to affect a lot in 5 years ago or a few years ago कि आपकी resume पे जो gap होता था वो
बहुत ऑफ पुटिंग होता था किसी रिक्रूटर के लिए या किसी हायरिंग मैनेजर के लिए, उसको कॉन्टैक्ट बैक ही नहीं किया जाता था. नाउ सिंस थिंग्स आर चेंज एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि भाई गैप्स के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अ ट्रॉमा इन योर लाइफ, और any bad incidents or any bad accidents or anything like that, या आजकल के टाइम में ले ऑफ्स का रीज़न हो सकता है कि आप ले ऑफ कर दिए गए हो, इसलिए आपकी रेज्यूमे पे गैप आया हो. सो if you are applying to a place that acknowledges the fact that रेज्यूमे के ऊपर जो गैप है वो कोई क्राइम नहीं है, इट डजेंट रियली मैटर. द रिक्रूटर इज गोना गिव यू अ कॉल एंड आस्क यू कि भाई व्हाई इज देयर अ गैप ऑन योर रेज्यूमे. If the answers are genuine enough, if the answers are understandable enough, you will have a fair chance at the jobs that you're applying for. Good. I think that answers Hira Zahid. Next question is on your screen. So this is kind of a question that an HR journalist can better answer कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. बट यू कैन गो ahead and do a little research online के क्या necessary. See, you can find everything on internet these days. Whatever job you are getting into, whatever contract you are getting into, um, उसके जो जो पॉइंट्स हैं उस पे जो जो चीज़ें हैं उसको आप सर्च करें, वेदर दे आर गुड इनफ टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद और नॉट, व्हाट एडिशनल पॉइंट्स शुड यू add into that or not. So a little research, and it goes a long way in doing anything that you're getting into. I pulled up another question on your screen. If you have only internship experience, we'll be able to. So see, I've been talking about this topic with a lot of youngsters ke internships के बाद directly, so obviously internships ज़रूरी होती हैं. And if you have enough internships on your resume, there is a high chance कि आप किसी position पे directly एक अच्छे handsome salary के साथ पहुंच जाते हैं. But the thing is not to keep in mind कि handsome salary देखनी है. आपने देखना ये है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो उसमें सैलरी के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं. इन टुडेज टाइम्स, वर्क्स एंड बेनिफिट्स, वर्क प्लेस कल्चर, work environment, and whether the place appreciates you or not, and whether they give you a work life balance or not. So internships or no internships, you can always get into the job that you are looking for. You just have to be consistent enough in your job search. You should have that faith that you can get into that. Having internships is a plus on your resume for getting into a job that you really want to get into. Handsome salary should not be your first requirement while you're looking for a job. Look for other factors that makes it a good enough package for you to accept. Good, good. Next question. As we have been speaking, extra set of skills, interpersonal communication skills, good, keeping yourself up to date with the latest trends in the market, requirements in the market, keeping your LinkedIn up to date, being good with communicating to people who can get you good jobs. That's basically it for getting a good job apart from experience. So straight out of university, that's not a problem anymore for you to getting a good job. नोमान ने मेरा ख्याल है लेट ज्वाइन किया है, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड दिस Yep. क्वेश्चन. तो नोमान, अगर आप वापस जाएंगे आफ्टर दिस लाइव सेशन, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, तो दोबारा देखिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर्स. Okay, so I think this question is. Do you want to answer this question, or do you want to defer it to Yeah, me? yeah, you are a more technical person, but being a technical recruiter, I suggest everybody to learn JavaScript. JavaScript, I think, is the mother of all languages right now. Whether you're front end, back end, or full stack developer, JavaScript is something that you should know from basic to advanced. It should be on your fingertips. Right. So there are two discussions, two different debates on that. Whether
a fresh graduate should learn JavaScript or not. They should learn JavaScript or not. But talking about adopting as in career, I was going through a mentoring session yesterday about the same topic. मेरा ख्याल है for a developer who want to pursue their career, who is starting their career, उनको एक हाई लेवल लैंग्वेज अपने करियर के स्टार्ट में जरूर सीखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल सी शार्प, फॉर एग्जांपल जावा. इनको सीखने से ये होता है यू construct a very good and firm foundation of programming concepts and programming knowledge in you. Java is all about anti patterns. ठीक है, they do not have lots of good practices in JavaScript. तो बहुत सारी जॉब्स इस वक्त जावास्क्रिप्ट की ही हैं इंडस्ट्री में. मैं ये नहीं कह रहा कि इसको लर्न मत करें, लेकिन एक मेजर लैंग्वेज, एक मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक सी शार्प, लाइक जावा, ये जरूर सीखें. इसके अंदर अपना थोड़ा सा करियर बिल्ड करें. देन मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट एंड वनीला जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स व्हिच आर अवेलेबल दिस डेज, Vue.js, React, Angular. तो उजैर, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू आई थिंक. और यार जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं. आई थिंक दिस विल गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन. So again, completing your degree is a big part of securing a good job, and but I think we are moving past that. I have read so many articles of Microsoft and Google finally leaving behind the constraint of you having a professional degree before you land into a job over there. So yeah, if you have a set of skills that is complete enough, that is ample enough for you to fall into the requirement section, I think you can get into those jobs and those big companies. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, मेरा ख्याल ये आखिरी होगा शायद. सो या ये यंग जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटर्नशिप ही नहीं करेंगे तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, पहली जॉब ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा. मैं कहती हूँ कि अगर इस टाइम पे अगर आप ये बात बैठ के बोलते हैं तो मतलब आप कनेक्टेड ही नहीं है इस दुनिया से या इस दुनिया में क्या हो रहा है उससे. So many platforms that provide you enough experience in terms of what you're learning, certifications, courses, and all of that stuff कि जो आपकी CV पे होगा तो nobody is going to ask you for a fresh level job कि आपका experience कहाँ है. Apart from that, almost all of the companies are offering internships and MTO programs, and even now companies are offering fresh graduates positions straight out of university via their placement centers, via job fairs, career fairs, and all of that stuff. So this rent is old enough for this world right now. All right, so I think we are moving towards the end of today's session. गाइस, जो भी ऑडियंस है जिन्होंने ये सेशन लाइव सुना है, जो बाद में इस सेशन को देखेंगे, कमेंट्स में मुझे बताएं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सेशन यू वांट मी टू हैव विद मिशाल इन कमिंग वीक्स, ताकि हम इनको दोबारा से इंगेज करें, इनका टाइम लें. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन सुननी है तो डू लेट अस नो, यहाँ कमेंट्स में छोड़ें और हम उससे फिर मिशाल का टाइम भी दोबारा से लेंगे और उसके ऊपर हम प्रॉपर होमवर्क करके आएंगे इनके एक्सपीरियंस से, इनकी ऑब्जर्वेशन से, और हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आएंगे इंशाल्लाह. तो डू लेट अस नो. Mishal, thank you very much once again for giving time to the community. My Code pleasure. Movement Pakistan has been operational since 2013. और हमारे दो लॉन्ग टर्म कोर्सेज आ रहे हैं अभी. वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड. ये सैटरडे ओनली कोर्स है लारावेल का. तो इफ यू वांट टू स्टेप इनटू अ फील्ड, लर्न लारावेल. देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांस जॉब्स, लॉट्स ऑफ वर्क इन लारावेल. लोग नहीं हैं, इसको सीखें और अर्न मनी. दूसरा हमारा जो कोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स का. तो ये 2-in-1 कोर्स है. इसमें ट्रेनिंग भी होगी और इसमें आपको सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन भी होगी. AZ 900 सर्टिफिकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है. That's a great one. So audience, please
Let us know what sort of session you want us to have. Thank you, Mishal, once again. Thank you very much. खुश रहें Sure. और अपना टाइम देते रहें Sure. कम्युनिटी को. Sure, for sure. Thank you so Okay, much for Allah having me, Raj. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.